It was my mistake that I didn't study for like both the years 11th and 12th. I started preparing after my boards कि मैंने इतनी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया. मैंने VA स्टार्टिंग से ही मेरा बहुत वीक था. एक और मिस्टेक मैंने करी थी कि मैं लास्ट के कुछ डेज में थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हो गया, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो गया था. वॉर चल रहा था. Hey folks, Saksham this side from ACE IPM. In this episode of ACE It, we have Parth with us who got into IIM Rohtak's IPM admission process this year. In this video, let's hear about his journey of navigating through his drop year and preparing for the same. So without any further ado, let's begin. And hello Parth, can you please introduce yourself to us? Hello everyone, my name is Parth Modi and I am from Garot, a town in Madhya Pradesh. I scored 96% in class 10th and 93.2% in class 12th from commerce stream. Also, I was a full dropper and part of the first offline batch of ACE IPM. Thank you. And as you were a full dropper, could you please help me understand, you were also a very early student of our 2024 batch. So in that case, given that you've prepared with us for so long, what led to you not getting into any of these IIMs last year? I enrolled in ACE IPM in my class 11th, but it was my mistake that I didn't study for like both the years 11th and 12th. I started preparing after my boards from the accelerate batch, but then I didn't secure any admission in any IIM, so I decided to take a full drop for the preparation of IPMAT. Yep. So please understand this one thing कि if in case you are preparing for this exam just because you purchased our course or you started your preparation way early does not mean कि आपका हो ही जाएगा. उसके लिए आपको consistent रहना पड़ेगा. In his case, he took the batch 2 years earlier and still did not make any use of that. तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप सिर्फ हमारी जेब भर रहे हैं, आप अपने लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं. Regardless of when you start your preparation, चाहे पहले हो बाद में हो, please make sure you are being consistent. Yes, he was consistent in the last 1 month, but not for everybody, it is going to be enough. So and that is why he had to take a drop. So I'd recommend you that you are consistent right from day one, जब से भी आपने preparation चालू करा है. So yes, आपने drop लिया. You were not very consistent in the first half of your journey in your class 11th and 12th. But drop लेने के बाद how was your journey like for in terms of preparing for this exam in the last 1 year? क्या आप इस time में consistent थे? Yeah, initially I was enrolled in the online batch. I knew that ACE IPM was going to start its offline batch also. So I was sure that I had to take that offline batch whenever it starts. तो मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन. घर पे मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में भी था, तो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट घर पे नहीं रह पाया जितना मैं ऑफलाइन बैच में आके जितना ज़्यादा प्रिपेयर कर पाया. तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट दैट कंसिस्टेंट इनफ एट योर होम इन योर कंफर्ट जोन, then offline batch is like a nice place for you. Fair enough. So in that case, since you took a full drop, partial drop का भी option होएगा. पहले भी आप किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते थे. You might have gotten admits, in the private universities. Why did you choose to take a full drop instead rather than just going for a partial drop? Actually, I got offer letter from like Symbiosis Pune, and also I got a South Campus college in DU. But I chose IIM as my like dream college. It was my dream college, IIM Indore. So I decided to go for a full drop instead of partial drop. But now after completing this year, I would suggest a partial drop for all the students who are preparing for the IPMAT. Fair enough. Yeah, I mean that is our recommendation also. Partial drop in general is going to be better than a full drop. Of course, conditions अलग-अलग होती हैं depending on what is your situation at your home, what are your aspirations. You might take a different decision, but in general, as a general thumb rule, we recommend partial drop over a full drop. Preparation पे आते हैं. So you prepared for all these examinations. You cracked IPMAT of IIM Rohtak. So in that case, can you help me understand how did you prepare for the QA section, and then we'll come to VA and LR as well. For the QA section, I started with conceptual lectures from the portal. उसके साथ साथ रवि सर की क्लासेस भी चली, उनको भी अटेंड किया. फिर रिवीजन सीरीज़ थी, तो उनसे रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाता था और प्रैक्टिस भी कर पाता था. पर अगर मैं कहूँ कि लाइक हाउ आई मिस्ड IIM इंदौर, तो इट वाज लाइक कि मैंने इतनी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया. मैंने मॉक एनालिसिस थोड़ा सा ढंग से नहीं किया. शायद मुझे अगर मैं देखूं, मुझे लगता है कि मॉक एनालिसिस में अगर और ढंग से कर पाता तो शायद इंदौर के लिए चांस बन पाता. Fair enough. And coming to VA, तो VA का preparation, how was it like for you? VA स्टार्टिंग से ही मेरा बहुत वीक था.
like I didn't have that exposure in the VA right from the starting. तो मैंने एक सिंपल सा प्रोसेस रखा कि जो भी लाइक आई यूज टू फॉलो सर्स एडवाइस एंड द एडवाइस फ्रॉम व्हाट आई गॉट फ्रॉम द SIPM. सिंपल से ही RC आती थी ग्रुप पे, वो मैं रोज़ पढ़ता था. न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने चालू करी. इस चीज़ में मैं कंसिस्टेंट रहा तो एंड तक आते आते मेरा VA प्रिपरेशन सॉर्ट हो गया था. Fair enough. And what about LR? Although LR as a section is something which does not demand a lot of time, but ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल completely neglect कर सकते हो because it is a scoring section. So how did you make sure that you are scoring in that? LR is my strongest point right now. You already know that. LR का मेरा सोर्ट था. मैं जब भी QA या VA पढ़ने का मन नहीं होता था तो आपके लेक्चर्स ही देखता था, ताकि मैं अगर बोर भी हो रहा है तो मैं LR के लेक्चर्स खोल के बैठ जाता था, और इसी वजह से मेरा LR बहुत स्ट्रांग हो गया था. Yeah, I mean LR was a strong point for him because I don't think, you know, in the mocks that he has given for Rohtak as well as Chipmat, there would hardly be any mock where he scored, you know, got less than 36, 37 questions right out of 40. So LR anyway was good with him. Major जो practice जो बच्चे वैसे भी करते हैं, that is on QA and VA, and that was the case with him as well. So आपने ये सारी preparation करी, you went for your examination. You know, let's come to IIM Indore first, and then we'll go to IPMAT Rohtak. So what essentially on the D-Day, what do you think went wrong in IPMAT Indore? Because even in that exam, you know, looking at your mock scores, looking at your preparation, you were also an offline student, so you know we could, you know, see your progress and track it. So in that case, what do you think happened in that, you know, on that particular day, जिसकी वजह से शायद IPMAT Indore इतना अच्छा नहीं गया? My D-Day experience was not really good, if I be honest. एक तो MCQ सेक्शन मेरा कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उसका इफेक्ट VA पे भी दिखा. तो ये एक और मिस्टेक मैंने करी थी कि मैं लास्ट के कुछ डेज में थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो गया था. वॉर चल रहा था. तो इसकी वजह से भी IIM इंदौर का मिस रह गया. Yeah, I mean the externalities are always going to be there. There was a time, you know, everybody was anticipating paper शायद delay हो सकता है, postpone हो सकता है. Irrespective of the situation, I know times could be tough, but you need to make sure if you are focused on one particular examination, you are giving your all into that, you know, right till the very end. So that is going to be there. But then IPMAT Rohtak का भी आपका एग्जाम हुआ. As a matter of fact, वो तो पहले ही हो गया था आपका. So how was that like? It was really good, to be honest, क्योंकि अब तो वही हुआ है. एंड इन दैट केस IPMAT रोहतक हो गया. अब लोग यूजुअली कहते हैं IPMAT रोहतक चिपमैट आर वेरी सिमिलर एग्जामिनेशंस इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड ऑल. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? लाइक आर देयर एनी डिफरेंसेस इन दीज एग्जामिनेशंस? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैटर्न, बट इन टर्म्स ऑफ हाउ यू वुड प्रिपेयर और गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम. If we look at both the exams, major overlap syllabus में already है. LR, QA, VA, same level of questions we can expect from both the exams. तो प्रिपरेशन भी सेम ही होता है. बस अगर आप वैसे भी इंदौर का आप अगर कर पा रहे हो तो आपका QA और VA इन दोनों एग्ज़ाम का भी सॉर्टेड ही रहता है. लाइक LR में आपको थोड़ा सा और प्रिपेयर करना पड़ता है. तो ये भी एग्ज़ाम्स अच्छे बैकअप ऑप्शन है अगर आप IIM इंदौर चूज़ कर रहे हैं. Fair enough. And in that case, you know, you did all of this preparation. You were a part of ACE-IPM. You know, you have been a part of ACE-IPM for the last 3 years now. Yeah, 2 years in, you know, before your first attempt, and 1 year, you know, which was your last drop. So in that case, how has your experience been with us in the last 3 years? Both, you know, first in the online batch, now in the offline batch too. It has been really good. मैं जब ड्रॉप लेने की सोचा भी था तो पेरेंट्स ने भी पूछा था कि और कौन सी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है क्या. तो मैं आई वॉज श्योर दैट कोचिंग तो यही लेनी है, अगर ऑनलाइन भी है तो भी यही लेनी है. तो मैं 1 महीने में जान गया था कि यहाँ पे मैं सीख सकता हूँ, यहाँ पे फैकल्टीज़ अच्छी हैं, मटेरियल अच्छा है, और एक ऑनलाइन सपोर्ट भी जो चाहिए होता है वो मिल जाता है. तो शुरुआत से ही मुझे कंफर्म था कि मुझे SIPM से ही करना है. Fair enough. Let's just come to the interview part now. Interview, although Rohtak के case में it is a small weightage of 15%, but nevertheless it is also something that could be a make or break. What was your interview preparation like? Because आप एक dropper थे. Dropper होने का, you know, one downside is that कि आप सब भूल चुके होते हो कि आपने 12th में क्या पढ़ा है. And those are the kind of questions they usually ask in an interview. So how did you go about preparing for that? And also आपका Rohtak का interview experience कैसा था? जब इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट आया तो अगले ही दिन मैं ऑफलाइन सेंटर पे पहुंच गया था वैसे तो, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ड्रॉपर हूँ. 11th 12th मुझे पास्ट एकेडमिक्स इतना रिवाइज मैंने कुछ किया नहीं है, इतना तो याद भी नहीं होगा. और मेन रीज़न था कि एक्सटेम्परी भी होता है, उसमें भी मैं बहुत लाइक आई वॉज नॉट गुड एट ऑल इन माई कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो.
तो आई नो कि अगर मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि टाइम भी कम मिलता है रोहतक में, तो हो जाएगा एंड में आते आते। एंड हो गया था, क्योंकि मुझे ऑफलाइन सेंटर पे एक तो हुआ कि सपोर्ट भी अच्छे से मिला, मेंटरशिप भी अच्छे से हो गई, और बच्चे भी जो साथ में आए थे उनके साथ भी क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह होते थे, उनके भी एक्सपीरियंसेस जानने का मौका मिलता था, तो उससे भी बहुत सपोर्ट मिला। Talking about his extempore, if one thing I know about Parth is that he's a very creative person. If I ask him to write something down on any random topic, right, if I give him a written ability test, he will be top notch. He will be the best person, in terms of whatever he writes in a very limited amount of time. But if I ask him to say the same thing in an extempore, he is not able to voice his opinion, voice his thought. That was a very big problem with him, when he started with his interview preparation. दिक्कत रोहतक में ये भी होती है, रोहतक के टाइम पे आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा दिन का टाइम मिला था टू प्रिपेयर, हार्डली अ वीक, 5 to 6 days, या वही 4-5-6 डेज का टाइम था. सो दैट इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट प्रैक्टिस, बट ही डिड दैट लाइक दिन के 10-15 एक्सटेम्परी देना, अच्छे से करना टू अ पॉइंट कि वो 5 दिन में यू कुड सी अ विजिबल इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ द वे ही गेव एक्सटेम्परीज. एट द सेम टाइम इफ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग, देयर इज नो हार्म कि अगर आप हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे ही रैंडमली कोई एक टॉपिक उठा के यू जस्ट प्रैक्टिस ऑन दैट, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होएगी, दैट विल बी हेल्पफुल इन द इंटरव्यू पार्ट एज वेल. और एनी वे यार लाइफ में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आर गोइंग टू टेक यू अ लॉन्ग वे. सो प्लीज़ मेक श्योर कि IB-MET पढ़ो, बढ़िया है. ऐसा नहीं है कि आप अभी से पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन करने लग जाओ, बट एटलीस्ट यू मेक श्योर दैट you are giving that very little amount of time जब भी आप फ्री हो to all these things as well. So that was your interview, that we have covered the interview, we have covered the entrance as well, and I'm really glad that you made it to IIM Rohtak. But do you have any tip for your future juniors in terms of if they are preparing for all these examinations, what would be your advice to them, so that they also get to one of these IIMs next year? The one major and the most simple advice would be consistency. It is the key to IP-MET. It is the key to any other exam. It is the key to any other what you do in your life. You need to be very consistent and be focused. Like अगर आप दिन में एक टाइम भी कम दे पा रहे हो, पर you are consistent enough, तो हो जाता है एंड में आते आते. Thank you so much. That was a wonderful tip and something that you all should imbibe. I mean, he's a real live example of being consistent and not being consistent, and the result of thereof. Thank you so much for coming here. Thank you so much for sharing your journey with us and all the aspirants for IPM. Guys, if in case you are also preparing for IPM, you can check out our batches available both in online and offline format. We have batches available for freshers, droppers, class 11, 12th, all categories of students. So if in case you're interested in that, you can head over to aceipm.com, look at our courses, watch our demo lectures, talk to our counselors, understand what is it that we offer, what is it that IPM as a course offers, and see if you are the right fit for it. If in case you do decide to enroll, I'll see you on the other side. Till then, stay safe, take care, all the very best, and bye-bye. Thank you. Ready to ace IPM? Get started by going on aceipm.com, and over there you'll see a free counseling button. You need to click on that and enter all your details so that one of your future seniors can get in touch with you and clarify all your queries about IPM and ACE IPM. Thank you.